સ્મરણનો વિષય થઈ જાય માનસિક જભારો. ત્રીજો મહામંત્ર મનથી નહીં નીકળે. પહેલો નીકળ્યો, બીજો નીકળ્યો, ત્રીજો કદાચ નીકળ્યો, ચોથામાં તો વાત જ જવા દે. ક્યાં તમારું ઉઘરાણી વાળા દેખાય, ઓલા કેટલા દેખાવા પડશે. કારણ કે मनનો विषय आगे उभो रही जाए मानसिक. तो सबसे बेस्ट है इतना धीरे बोलना कि हम सुन पाए, मतलब श्रवण भी होगा और उस शब्द पर हमारा ध्यान केंद्रित होते हुए मन के अंदर स्मरण का विषय बनेगा. और इसी बात को हमारे तुलसीदास जी ने गाया है कि नाम जपत मंगल दिश दशहु. जो इस भगवान राम के कृष्ण के नाम को जपता है उसका दशो दिशा में विजय होता है. दिशा दर्शित पाछी खबर ने कि આપણે ઈસ્ટ વેસ્ટ નોર્થ ચાર નો સમજતા હો 10 આવે 10 આવે પ્રભુ ઈ બાજુ નેત્ર ઈ બાજુ ખોળામ ખબર નહીં આવે તેમ આપણે તો ચાર ફેમસ છે 10 દિશામાં રક્ષણ. અને એ જ ભગવાનથી વિરુદ્ધ 10 માથાવાળા નો બચે કયો રાવણ 10 દિશામાં એક વિજય કરાવે અને 10 દિશામાં પાવર હોય તોય નહીં બચાવી લે. ઈ જ રામ છે. એક નામથી તારે હોતે અને કાર્યથી મારે હોતે. રામનો પ્રભાવ છે. 10 माथा जाता ना. तो यदि हम 10 दिशा में हमारी विजय चाहते हैं तो हमें चाहिए उस भगवान के नाम को जप करें, क्योंकि जगत के अंदर सर्व सिद्धि को देने वाला यदि कोई है तो भगवान नाम है. सभी दिशा में विजय, सभी सिद्धि को प्राप्त, सब कुछ भगवान का नाम देने वाला है अमंगलहारी, है ना रामायण का प्रथम. तो आज का हमारा ये जो श्लोक है जिस पर कह रहे हैं विदुर उद्धव संवाद में कि मैत्रेय सुखदेव जी के शब्द है कि अजस्य जन्मो पथनाथ नाय. कह रहे हैं कि भगवान अवतार लेते हैं तो भगवान के अवतार के बारे में इस श्लोक में बताते हुए कहते कि अजस्य, पहला शब्द जो श्लोक का है अजस्य अर्थात अजन्मना, जन्म रहित, जिसका जन्म नहीं है वह अजस्य. जिसको भागवत 1:8-33 माता कुंती के भी शब्द है कि अजस्यस्य क्षेमाय वधाय सुंदराय. महारानी कुंती भी भगवान की प्रार्थना करते हुए कहते कि अजस्य, आप अजन्मा हो, आपका जन्म नहीं है, लेकिन उस देवकी और वसुदेव को आनंद देने के लिए भगवान आप प्रकट हुए हो. यहां पर भगवान के अवतार को हम सुन रहे हैं श्लोक क्रमांक अनुसार. तो उस भगवान अजन्मा है, जन्म उसका है नहीं, वो प्रकट होते हैं. और क्यों प्रकट होते हैं? तो कहते हैं कि देखो अपने एक दूसरा शब्द है कि जन्मोपथ, अपने जन्म लेने के कारण अपने पद से जो भ्रष्ट हो गए, अपने जीवन के लक्ष्य को जो चूक गए हैं, जो गीता में बाह्य कारण गिनाते हुए भगवान स्वयं कहते हैं कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. अर्जुन मैं सभी युगों में अवतार लेता हूं. क्यों अवतार लेता हूं? साधुओं की रक्षा के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए. तो जो अपने पद से भ्रष्ट हो गए, अपने असुर कार्य कर रहे हैं, ऐसे पद भ्रष्ट लोगों को सही ठिकाने पर लाने के लिए भगवान अजन्मा होते हुए भी अवतार लेते हैं. लेकिन महारानी कुंती कहते कि जैसे अगले श्लोक में कहा कि नाट्यम नाटो धरो यथा, उसी महारानी कुंती के श्लोक की वंदना चालू करते दूसरे तीसरे श्लोक में ये शब्द है कि प्रभु आप जब अवतार लेते हो, जैसे एक रंगमंच पर कोई नाटक करता है तो वास्तव में वो है मनुष्य, लेकिन पात्र अनुसार वो ड्रेसिंग करता है. આપણે ગામડામાં રમે ને અત્યારે રામદેવ પીરના આખ્યાનમાં એમાં પાત્ર એવું એટલે વેશ ધારણ કરે, એવા કપડા ધારણ કરે, બાકી છે એ કોઈ બીજા ભાઈ.
लेकिन उसी तरह जैसे एक नाट्य करने वाला कलाकार रंगमंच पर अपनी कला दिखाने के लिए अलग अलग वेश को धारण करता है, उसी तरह महारानी कुंती के प्रभु आप हो अजन्मा, आप ईश्वर हो, आप कण कण में व्याप्त हो, लेकिन आप इस जगत में अवतार लेकर ऐसी ऐसी लीला करते हो कि सुहियंती मोहि, जो पहला एक 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 सभी लोग मोहित हो जाते हैं। और आपका वास्तविक अवतार लेने का कारण है कि इस जगत के जीवों को सही मार्ग देना, धर्म की स्थापना करने के लिए। अब देखो भगवान अजन्मा है, मतलब देखो सूर्य इस जगत के अंदर हम देखते हैं तो क्या अभी सूर्य नहीं दिख रहा है, अंधेरा है मतलब सूर्य नहीं है? कोई कह सकता है कि सूर्य नहीं है, आकाश में अजर अमर सत्ता जिसकी है? તમે અમેરિકા અત્યારે કોઈને ઓળખતે ફોન કરો, દિનેશભાઈ લગાડો ને કહે છે દિવસ છે તમને, હું તમને કહે છું સૂર્ય કઈ અંદાજે નથી છે ને? तो यहां की समय की अवधि अलग है, मतलब नहीं दिख रहा है, तो कोई मूर्ख कहे कि सूर्य नहीं है तो नहीं है, चलो माना, तो कल सुबह उदय तो होगा ना। उसी तरह भगवान इस जगत के कण कण में व्याप्त है, समय आने पर उदय होते हैं बस। जैसे सुबह में सूर्य अभी नहीं है, लेकिन सुबह क्या होगा, प्रकट होगा सूर्य पूर्व दिशा से। उसी तरह भगवान इस कण कण में व्याप्त है, जिसका जन्म नहीं है वह प्रकट होते हैं। इस बात को समझना होगा, जिसको आप अच्छी तरह प्रकरण, जब वो देवता वो देवकी के उदर में जब भगवान आए तब इस प्रसंग को अच्छी तरह समझ पाओगे यदि अभ्यास किया हो तो। दशरथ यहां पर भगवान की जन्म की बात है, किस तरह वो वसुदेव के मन में आए और वहां से कैसे देवकी के मन में गए और देवकी के मन से कैसे देवी के उदर में गए। जैसे पूर्व दिशा में चंद्रमा धारण करती है, पूर्व दिशा चंद्रमा की जननी बताई गई है, लेकिन वो पूर्व दिशा में चंद्रमा को धारण करती है। चंद्र तो पहले है आकाश में, वो तो सिर्फ उसको धारण करती है। उसी तरह भगवान आप कण कण में हो, माता देवकी ने तो आपको आपकी उदर में धारण किया है और प्रेम से प्रकट होई में जाना, भगवान राम के अवतार की बात जहां पर है। पर क्या है भगवान का स्वरूप क्या है, तो उसी पद्म पुराण के अंतर्गत भगवत महात्म्य में कहते हैं कि देखो ये तो पहले सत्य चित और आनंद से बने हुए विग्रह, इसमें ना कोई खून है ना कोई मज्जा है, केवल एक ही बात है, आनंद से बना हुआ विग्रह। आनंद के सिवाय कुछ नहीं है भगवान आपके शरीर में। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान मैं आपको प्रणाम करता हूं क्योंकि आप आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक तीनों ये जो ताप है उससे आप परे हो, साथ साथ रजो तमो सतो सभी गुणों से ऊपर शुद्ध सत्व में रहने वाले पुरुष हो। और आपका विग्रह क्या है, सत्य चित और आनंद से भरा है। ऐसे भगवान को कह रहे कि अजस्य, जिसका जन्म नहीं वो भगवान अवतार ले रहे हैं, और साथ साथ ऐसे व्यक्ति के लिए अवतार ले रहे हैं जो इस जगत के अंदर अपने पद से भ्रष्ट हो चुके हैं। ऐसे लोगों के लिए भगवान अवतार लेते हैं। लेकिन विशेष बात क्या है भगवान के अवतार लेने की? चलो ये तो बाह्य कारण हो गया कि परित्राणाय, वो तो भगवान के अपने धाम में बैठे बैठे नहीं कर सकते, क्योंकि सब जानते हैं कि भगवान की इच्छा बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। फेमस बात है कहने के लिए, और उसी बात को हमारे संतों ने गाया भी कि तुम्हारी इच्छा ये सर्वेश्वर, सब कुछ होता है, ब्रह्मा पालन करे, शिव संहार करे, सब आपकी कृपा से होता है, आपकी इच्छा से होता है। आप केवल क्या करते हो, गोविंदमादि पुरुषम, बस अपने ब्रजवासियों को सुख देते हुए मुरली वादन करते रहते हो। हम भगवान ने चॉइस કરવા માટે એક બીજા મુરલી શબ્દ નીકળ્યો નથી કે વાત કરું, તમે કૃષ્ણનો કોઈ બી પોસ્ટ જોઈ લો, તમને કોઈ સડેલું મોઢું નહીં લાગે, ટેન્શનમાં નહીં લાગે। અને પહેલી વાત જેને ગીતામાં કીધી કે ઈશ્વર હું છું, કોઈના બાપની બીક નથી, મુરલી સિવાય કોઈ શસ્ત્ર હાથમાં નહીં હોય, કોઈ બી ફોટામાં જોઈ લો, બાકી કોઈ તમને ત્રિશુલ લઈને બોલશે, કોઈ ભાલું લઈને, કોઈ તલવાર લઈને, मतलब કોઈનાથી કોઈને ભય છે।
અને ઈશ્વર આનંદમાં. આનંદમાં ઈ ગાન કરીએ કે ઈ નાટક કરીએ કે ઈ નાચીએ કે ને? સમજાય છે? સ્વરૂપમાંથી દેખાય ઈશ્વર કોણ છે. એ તો ક્યારેક સુદર્શનને બોલાવે શિશુપાલ જેવા આંબે હોય, બાકી ખિસ્સામાં નથી પડતા. બાકી બીજાને તો તમારે તલવારોને હાથમાં લઈને ફરવું પડે, મૂકીને હોય કે ઘડી ઘટે. મતલબ કોકને બીક હોય તો જ બાલું નારે હોય ને. પરમ તત્ર સર્વત્ર કોઈ ના. એકેલે ઈશ્વર આર સબ ભૃત્ય, જૈસે નચાય સબ નાચ નિત્ય. એક ઈશ્વર છે, આખા જગતને જેમ નચાવે એમ લોકો નાચવું પડશે કર્માનુસાર. પણ એ ભગવાન અજન્મ હોવા છતાં જન્મ એટલે લે છે. આ બધા તો બાહ્ય કારણ કે અસુરોને મારવું ને ધર્મની સ્થાપના કરવી ને. અનુગ્રહાય ભક્તાના, પોતાના ભક્તોને આનંદ દેવા માટે ભગવાન તમે અવતાર લ્યો છો. અને શું કરો છો અવતાર લઈને? ઈ પૂતનાને મારો, ઈ ગોવર્ધન ધારણ કરો, ઈ ઉખલબંધન લીલા કરો, ગોપીઓ હારે રાસ રમો, માખણની ચોરી કરો. આજ તમારી કથા ભક્તોનું જીવન છે. એની માટે તમે અવતાર લ્યો છો. अपने भक्तों को आनंद देने के लिए आप अजन्मा होते हुए भी जन्म धारण करते हो और इस शरीर से ऐसी ऐसी लीला करते हो कि भक्त लोग उसको गाते हुए आनंद. जो भागवत કેટલા વર્ષોથી આપણે સાંભળીએ છે, તોય નિત્ય નવીન ગ્રંથ છે. તમે કોઈ બે અમારા પાડોશી ભરતદાદા બેઠા છે, તમારા જમાનાનું એક જૂનું ગીત અંદર યાદ કરી લો તો કેટલી વાર ઘસાઈ ગયું એટલું યાદ કરી લો, પણ એમાં આનંદ નહીં હોય. હવે તમને ગાવાની મજા નહીં આવે. કૃષ્ણ શબ્દ અનાદિકાળથી લોકો બોલી રહ્યા છે, ગાય રહ્યા, સાંભળી રહ્યા છે, તો નિત્ય નવીન સુખ દેવા વાળો શબ્દ છે. કેમ? क्योंकि वो मोद न मुक्ति के मंदिर में जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में है, इतनी छवि और अनंत कहाँ, जितनी छवि सुंदर श्याम में है, इतना सुख कहीं और नहीं, जो सुख कृष्ण के नाम में है. કેટલા વર્ષોથી લોકો કૃષ્ણ ઉપર બોલી રહ્યા છે, કૃષ્ણ ઉપર ગાઈ રહ્યા છે, તોય આનંદમ બુદ્ધિ વર્ધનમ પ્રતિપદમ પૂર્ણામૃત સ્વાદનમ કરાવવાનો શબ્દ છે કૃષ્ણ. અઢી અક્ષરનો શબ્દ છે કૃષ્ણ. અને જીભની સાઈઝ શાસ્ત્રોમાં અઢી અક્ષરની કીધી છે. અઢી અક્ષરની જીભ ન બોલવાનું ઘણું બોલે છે, અને પ્રેક્ટિસ આવી પડે છે કે અઢી અક્ષરનો કૃષ્ણ શબ્દ બોલતા શીખ. અને અઢી અક્ષરની જીભમાં જ્યારે અઢી અક્ષરનો કૃષ્ણ શબ્દ બોલતા શીખી જાય, સંસારની વિપત્તિમાંથી બહાર નીકળી ભગવત ધામના અધિકારી બની જશે. તો વાતો તો ભક્તો ઘણો છે, તેમ પાછા કહેશો કે પહેલી વાર તમે ભક્તો વર્ષમાં મળ્યા, પહેલા વાર એટલું બધું ખેંચવું નથી મારે. ओके, इस महामंत्र को गाते रहो. कृष्ण इसीलिए अवतार लिए हैं कि उनकी लीला को ऐसे सत्संग में हम सुनकर सत्य भगवान को समझने का प्रयास करें और इस जगत से जल्दी और जल्दी छूटने का प्रयास करें. हरे कृष्ण. श्री प्रभुपाद की जय. निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. और साथ साथ बजरंगदास बापाना सेवक इत्यादि જે કોઈ પૂરો સાથ આપી રહ્યા છે આ સત્સંગને વધારવામાં કરવામાં, તો હરે કૃષ્ણ ભક્ત સમાજ અત્ર તત્ર સર્વત્ર જ્યાં હોય એ ટીમ અત્યારે તો કદાચ પણ દાદાને પ્રાર્થના એટલી પહોંચાડી દેશે મેસેજ કે તમારી કૃપાથી આ જગ્યા તમે આપી છે, મતલબ ઋણી છે હરે કૃષ્ણ સમાજ. તો ધન્યવાદ તમારો એથી જે આમાં કાર્યકર્તા કમિટીમાં હોય ઇત્યાદि. અને બાકી વિશેષ તમારો બધાનો ધન્યવાદ. ગિરધારી મંદિર પાસે છે, નજીક છે. જીવનની સાર્થકતા એમાં છે કે આંખી મારી ઉગડે ત્યાં सीताराम देखो, क्योंकि आंखों का भी भरोसा नहीं, न जाने कब खुलेगी कब बंद होगी. खुले છે ત્યાં લગી તો જોઈ લે, અને બંધ હોય ત્યારે જે જોયેલું છે એનું સ્મરણ કરે. બસ અભ્યાસ કરવાની વાત છે. जिस कृष्ण को हमने देखा है, जिस स्वरूप को देखा है, जिस भागवत को सुना है, जब सोते हो ना तब उसका स्मरण करके सो. કોઈ અવળું સપનું આવી જ જોવે? આ તો વિચાર દુનિયાને લઈને સપનામાં એવું જ આવે બધું. તમારે વાત જાણે આખો દીની માથા પીડી. उस कृष्ण की छवि को देखो, इस भागवत के श्लोकों को देखो, उस गीता के शब्दों को याद करते हुए कौन अड़ी है कि तुमने सपना में. ओके, हरे कृष्ण. हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
હરે રામ 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 હરે હરે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ નીલકંઠ પ્રભુએ આપણને સાધુ સંઘ આવ્યો તારનો એક જ છે સાધુ સંઘ સર્વ શાસ્ત્ર કહે. તો બધા શાસ્ત્ર કહે છે કે સાધુઓનો સંગ કરો, સાધુઓનો સંગ કરો. તો પ્રભુજીએ પણ આપણને એ જ બતાવ્યું. તો ઘણા આપણને સાધુઓ અહીંયા રાધા ગીતાની મંદિરમાં છે અને રામાયણમાં પણ પ્રસિદ્ધ ચોપાય છે. बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा